Good morning, students. I Ghanshyam Daiya, KV number 1 Bikane. Today we will learn a new topic, menstrual cycle. What is the meaning of menstruation cycle? The reproductive cycle in female primates, like as monkey, apes, and human being, is called menstruation cycle. In human female, menstruation is repeated an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of the event is starting from one menstruation till the next one is called the menstruation cycle. In females, menstruation cycle is take place in 28 to 29 days, and its event is starting from one menstruation to next menstruation cycle. This cycle is essential for the production of oocyte and for the preparation of the uterus for pregnancy. It is very essential for things in female because it prepare the uterus for the pregnancy. Now, menstruations. What is menstruation? To menstruation is the process by which blood and mucous tissue are regularly discharged in periodic manners from the inner lining of uterus through the वेजाइना. मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल के अंदर से जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम्स है, ब्लड वेसल्स होती है, वो एक पीरियडिक टाइम के अंदर 28 टू 29 डेज में ये सेड ऑफ होती है, उतर निकलती है थ्रू वेजाइना, मेनार्च. It is the first menstruation begin in females. It begin at puberty. फीमेल के अंदर जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में जाती है तो उसमें फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन आता है तो हम उसको मेनार्च कहेंगे. What is menopause? The menopause is the permanent stopping of the menstruation cycle in female due to the depletion of oocyte as a result of aging. फीमेल के अंदर क्या होता है, उम्र के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो oocyte जो है वो कम हो जाते हैं, डिप्लेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है. जो ये जो एक निश्चित एवरेज में होता है जो कि 45 टू 50 एज होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है तो हम इसको मेनोपेज कहेंगे. नाउ, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. कौन कौन सी फेजेस होती है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैव 4 फेजेस: मेंस्ट्रुअल फेजेस, follicular phases, ovulation या ovulatory phases एंड luteal phase. तो ये 4 फेजेस के अंदर हम मेंस्ट्रुएशन को पढ़ेंगे. नाउ, मेंस्ट्रुएशन फेजेस. इट इज द पीरियड इन विच मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर. ये वो पीरियड है जब मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी 3 से 5 दिन का वो पीरियड जब मेंसेस आते हैं यानी ब्लीडिंग होती है, वो पीरियड मेंस्ट्रुएशन फेजेस में आता है. The menstruation flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessel which form liquid that come out through vagina. Menstruation only occur if the release of is not fertilization. Yeah, it is very important thing. Menstruation is take place on when that condition in which when fertilization is not take place. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है तो इट मे बी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट कोई जरूरी नहीं है. इट मे बी ड्यू टू द स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एक्सेट्रा. नाउ, that diagram you can easily find it each and everything in that graph. In graph you can see that is the menstruation phase, that is the follicular phases, that is the ovulation phases, and last that is the luteal phases. Okay, and every phases are further you can divide in 4 important things according to changes in the body. One is uterine event. It means what things are changed in uterus. Ovarian hormones, ओवेरी के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक एज एस्ट्रोजन्स या जो प्रोजेस्टेरोन है, उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं. ओवेरियन इवेंट्स, जो ओवुलेशंस, जो ओवम का फॉर्मेशन में ग्राफियल या प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स, इनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में. एंड पिट्यूटरी के हार्मोन्स लाइक एज एफएसएच एंड एलएच हार्मोन. यू कैन सी
that the menstruation phases, which is 1 to 5 days, 1 to 5 days period, is known as menstruation periods. That period is menstruation phase. ये 1 to 5 day है, and menses are take place in, and bleeding is take place this, and in the, and that even ovarian hormone estrogen and progesterone are normal quantity, and primary and primary follicles are formed in ovarian events, and FSH and LH are in a normal conditions. In follicular phases, you can easily find out that the follicular phases means the proliferation of phases. Proliferation of phases means that the endometrium's wall are in that event follicles are formed. Okay, in the wall follicles are formed. Also, in the endometrium's walls, that is the uterus walls, are increase in their sizes, and also you can see the estrogens and progesterone hormones level also increase, and you can see that the primary follicles, secondary follicles, and graphial follicles are formed in that event, and LH luteinizing hormones and progesterone hormone also uh, shortly increase in that event. In ovulation phases, where ovulation is take place, you can see it is the 14th day, 28-day menstruation cycle, that's half day, that is 14th. That day is the period in which ovulation is take place, and ovulation is the process in which ovum is released from the graphial follicle. You can see that is the graphial follicles and ovum are released. You can see important things in that things, that the luteinizing hormones and FSH hormone also increase. In this event, luteinizing hormone increase in a peak level, so it is also known as LH surge. And you can see in that 14th day, that means 14th day, you can see the estrogen level is also increased. Estrogen level in graph, you can see the estrogen level is also increased, and that is that phase is luteal phases. Next, that is luteal phase is, it means when the ovum is released, and after releasing the ovum, and the remaining part is known as corpus luteum. Corpus luteum is work as endocrine gland, and it maintain the pregnancy. If the fertilization is take place, then it release progesterone hormone. So you can see the ovarian hormones, that diagram you can see that is progesterone hormone. So it progesterone hormone increase in that hormone. If the fertilization is not take place, then after luteal phases, menstruation is again come. Okay, I think you can easily understand about that graph, and further we will study every phases. Now, follicular phases. Maturation of follicle is take place in this phase. Okay, the primary follicle in the ovary grow to form a fully mature graphial follicle. The endometrium of the uterus regenerate through proliferation. एंडोमेट्रियम इस फॉलिकुलर फेजेज में यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसका साइज बढ़ता ही जाएगा प्रोलिफेशन। इस दौरान ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो रिलीज होते हैं उनकी वो भी एक उसमें भी चेंजेज होएगा। ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर लेवल इंक्रीज ग्रेजुअली इन फॉलिकुलर फेजेज। आप देखेंगे इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है, यानी फॉलिकुलर फेज से धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज एज इट इज सीक्रेट फ्रॉम ग्रोविंग फॉलिकुल। हमने देखा था कि आपने देखा कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है इस फॉलिकुलर फेजेज में बढ़ जाता है। इट लास्ट फॉर 5 to 13 डे। जो फॉलिकुलर फेजेज होता है वो 5 से 13 दिन के बीच की होती है। नाउ ओवुलेशन। ओवुलेशन, LH and FS achieve a peak level in the middle of cycle।
आपने डायग्राम में देखा था कि 14th डे पर LH और FSH का एक पीक लेवल में पहुंच जाता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड LH surge. LH surge. LH surge induce rupture of the graphial follicles, thereby the release of ovum from the ovary called ovulation. LH surge जो कि इंड्यूस करता है ग्राफियल फॉलिकल, जिसके कारण उसमें से क्या होता है, ओवम बाहर की तरफ निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओवुलेशन। नाउ luteal phases. What is luteal phases? The remaining part of the graphial follicle transferred into the corpus luteum. जैसे ही ओवम बाहर निकलेगा, पीछे का जो सारा का सा पोर्शन है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। इसीलिए इस फेजेस का नाम होता है, ल्यूटियम से बना हुआ ल्यूटियल फेजेस। कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। याद रखें, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो कार्पस ल्यूटियम से ही रिलीज होता है। इस दौरान आप देखोगे कि प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन बढ़ जाता है। व्हाट इज द रोल फॉर प्रोजेस्टेरोन? तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर इट्स फॉर इम्प्लांटेशन। क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी यूट्रस की वॉल इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाए। थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम इंक्रीज इन मैनीफोल्ड ड्यू टू प्रोलिफेरेशन। आप देखेंगे यूटेराइन, अब तक इस फेज में यूटेराइन जो कि एंडोमेट्रियम है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत सारे फोल्ड आपको देखेंगे प्रोलिफेरेशन के कारण। इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा हो जाएगा और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कार्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा और कार्पस एलबी में चेंज हो जाएगा। डिस्टिग्रेशन डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू menstruations. Menstruation cycle cases around 50 year of the menstruation cycle ceased around 50 year of the age called menopause. हमने पहले भी पढ़ा था, 50 साल की एज में जो menstruation है वो सीज हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा। थैंक्स।